तो 84 के बेसिकली दो पहलू हैं। 6 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार, दूसरा जो कत्लेआम शुरू हुआ, सिख आदमियों को घरों से घसीट के बाहर लाया गया, उनको मारा गया, उन पे तेल छिड़का गया। Who ordered Blue Star operation? There is no document for that. After 1984, in Punjab there was not a big impact, but on Delhi like it was a massive impact. Every violence, there are two sides to it. There is a side which is most affected, and there is a side which of course is affected. Yeah. Violence in any ways is problematic. Welcome to another episode of The Soulful Therapy, and thank you for giving us so much love on all the podcasts that we have uploaded until now and all the reels on Instagram. Before we start this podcast, there's a small tip. Please read The Kaurs of 1984. We've added the link in the description for the book itself because there are a few references that we have taken from the book itself in this podcast. This podcast talks about what happened in 1984, especially in Delhi, things that women and children had to face because of 1984. Thank you so much, and please comment us and let us know your reviews on this podcast and let us know if you want us to improve something. Thank you. Thank you so much for giving your time. We've been tracking you down for a long time now. And then I think last year also we had the same conversation that you should come. And उस time पे आपकी book शायद release नहीं हुई थी, and I think it was just there. You told me कि ऐसा कुछ you're planning to do something like this, and then I think something happened. I'm not sure. I can't recall it completely, but I mean, you're a busy man. So thank you for giving your time. I exactly remember what happened. We were with somebody that we both know. Yeah. And we were outside a coffee shop. You were starting your podcast night. Then we were discussing things that you can do. And then he said that, hey, his book is coming out. Why don't he do a podcast on that? And we said, yes, we'll definitely do it. Yeah. As part. And how could you forget that? Yeah. And now it's like 2024. Your book is there. Cause of 1984. So the first question that I think everyone would like to know is what is cause of 84, and who are cause, like who do you refer cause with this cause of 1984? So the Cause of 1984 is basically a book. It's an oral history account, and we've tried to document stories of resilience, stories of strength, and stories of what women have endured during the 1980s. It starts from the tragic period of Operation Blue Star, and then it goes to the 1984 Sikh massacres in Delhi, and then it speaks about the aftermath, that what happened to these women. And generally what happened in every violence, we only discuss about that period of violence, which is like could be for 3 days, could be for a month, could be for 2 months, or could be for a year. But what happens is that we forget the aftermath. Yeah, that how these victims and survivors, what are their fights now? So hence the Cause of 1984. I wanted to put spotlight on how these women have spent their last 4 decades, the challenges that these women have faced, and also sometimes, and it's a worldwide problem. That what happens is that women's the accounts. Their struggles, their stories of strength and resilience, I don't know how they get erased or either get marginalized. And the only narrative that most of us remember is a political narrative, right? But so I got that these are very, very powerful stories and need to be told. And while I was working on 84, it was on the anti-Sikh massacres in Delhi. But then during the course of my research only, this thing just came that you have to document that what happened to these women after the massacres and how they spent their 40 years plus women in Punjab as well, what happened to them as well. So all of that together, I just tried to put it in this book. And of course, there are other amazing books as well, which are written on 1984, and I've been saying this, but I'm grateful to all of those authors as well, because those books have also helped us somewhere build a foundation of the work, and I'm sure somebody tomorrow will take this as a step and maybe write another aspect which is not known to us yet. And I asked you, like, whose cause? Like, why only Kaurs of 94?
because your book talks about children and women, but like if you look at the title of the book, it says Cause of 84, and to be really honest, it's really interesting. Like when I read the title of the book, it's really like it's quite picky. The cover page is really picky, and the name itself is like really nice, Cause of 84. But I really want to know that why then how did that name came up? So the cover, thanks to Saurav at Harper Balance, and the name because, like I said again, I wanted to tell about Sikh women, and it was I think 2016, and it was raining, and I was outside one of the survivors' home, and she wasn't home, and then the next door was open, and this woman was, she would generally not speak to me, and that particular day, because it was raining and the woman I was there to meet, she wasn't home, so she invited me in. She said, you can wait here, and that's when the conversation began with her for the first time. She offered me tea, and I asked her, why don't you speak to me? Like there are others who talk to me, they tell their stories, they share their stories, but she didn't say anything. And I think that evening also it was just चाय का कप और कोई बात नहीं हुई. मगर उसके बाद मैं रेगुलर जाता था वहाँ पर. तो एक दिन जब इनके साथ वापस बैठे तो मैंने इनसे फिर पूछा, तो उन्होंने कहा मैं 84 की लड़की. और जब आप ये बात सुनते हो और आप 84 के काफ़ी बाद पैदा हुए हो ना, आपको लगता है शायद ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ ये 1984 में पैदा हुई हैं, या उन्होंने देखा है इन फैमिली के साथ क्या आप यहाँ स्टोरी सुनी है तो 84 की रखी है. बट ऑलरेडी टॉकिंग टू हर आई कुड सी दैट tears coming out of her eyes, and it just hit me, and I realized that what she's talking about. So she was gang raped in 1984. And so the cause is story of, and I from my side attribute to all the Sikh women their resilience, their strength to what they've been through, and it's just an attempt to document all of that. Hence the cause of 1984. I had this question probably below in my list, but I really want to ask you at this point of time itself, since you mentioned that she was not talking to you, वो बात नहीं करना चाहते थे आपसे, और वो probably बात शायद ना भी करते आपके साथ. It just happened, that situation happened and she caused you. So I really want to ask is that you are not the only one who went there and asked all these questions. There might be a lot of Sanams. You were not the only one. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि when you are going again and again, asking them the questions, that wound is still there, and you are touching that wound again and again and again, so don't you think you are also responsible for them to put them in that state? I'm guilty of that. I mean, there's no doubt on that I am, because these conversations are very, very difficult. Very difficult. मुझे याद है कि पहले 6 महीने तो हमारी कोई बात नहीं होती थी, एंड किसी भी सर्वाइवर के साथ. एंड माई वे ऑफ रिसर्च इज़ ऑल्सो दैट आई वॉन्ट टू गिव इनफ टाइम टू पीपल आई टॉक टू. एंड पहले 3-4 महीने तो सिर्फ मैं जाता था, बता रहा था मैं क्या करता हूँ, क्या करने वाली हैं, और फिर काफ़ी टाइम लगा बात करने में. और एक दिन मुझे याद है दर्शनार्थी वो बोले, अब तू पूछेगा तो पूछने आता है, तो वो बात करेगा भी जिसलिए तू आता है. तो आपने मैंने वो रिलेशन क्रिएट किया उनके साथ. वो एक, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज लाइक आई सेड, आई एम गिल्टी ऑफ द फैक्ट दैट यू गो देयर एंड यू आर जस्ट स्क्रैचिंग दैट वुंड ऑल ओवर अगेन एंड यू वांट देम टू टॉक टू यू. मेरा उस टाइम टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं किताब लिख रहा हूँ. मुझे एक एमएससी की रिसर्च कर रहा था, वो तो था ही, बट उसके साथ आई रियली वांटेड टू डॉक्यूमेंट. मुझे लगा था मैं छोटे छोटे ओरल हिस्ट्री अकाउंट्स बनाऊंगा, दैट्स इट. ऐसा नहीं था कि किताब लिख रहा हूँ. तो इसलिए कोई प्रेशर भी नहीं था कि आपको ये सबमिट करना है या कुछ मैन्युस्क्रिप्ट देना है, वैसा तो था नहीं. तो मुझे आई वांटेड टू टेक टाइम टू बी एट दैट स्पेस जहाँ पर आप मुझसे बात कर सको, वो भी आपसे खुलकर बात कर सकें. तो इट टुक टाइम, बट जब दर्शन आंटी ने, लिटरी जी ने, उन्होंने खुद मैं ऑफ कोर्स उनको इनडायरेक्ट ही बताने कुछ छोटी बातें करते थे, मगर बिकॉज आई एज अ रिसर्चर आई वांटेड द फुल डिटेल्स. और मैंने देखा है उनको बात करते कई बार
वो अपने दुपट्टे का कोना पकड़ते थे, उससे आंखें साफ कर रहे थे। बहुत बार ऐसा होता था, बात करते करते हम दोनों नजरें चुरा देते थे। कई बार वो बात चले जाते थे, कई बार मैं कहता था मेरा आंटी फ़ोन आया, मैं अभी वापस आया। तो these conversations are very very difficult. तो दूसरा, it is burdening on मेरे पर तो था ही सुन पे कि मुझे लगता था मैं गलत कर रहा हूँ, और उनके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि एक बार आप फिर से रिलीव कर रहे हैं पूरा मेमोरी, पूरा मेमोरी की क्या हुआ, इस जिप पे क्या हुआ, उस जिप पे क्या हुआ, सूट इस घंटे पे क्या हुआ, बहुत बहुत। आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट, people will get to know when we'll talk about it, what happened in 1984 and after 1984, why we are in this podcast. I mean, while I was reading this book, there was a point when I just closed the book and I was like, I just need some breather and some time to process myself कि इतना ज़्यादा वो सिचुएशन कैसे हो सकता है, because it's not easy to read. So I'm pretty sure it's not easy for you to ask them, and it's not definitely not easy for them to tell you what happened. But it's like reliving the moment. Like when we started before we started the podcast, we were talking about our personal life. Then when I was sharing those things with you, I was reliving that moment in my head. Right. I was disturbing, and our life, like if I talk about myself, my life is nothing comparative to what they've gone through. So I'm pretty sure all of it had been very difficult. Yes. We've been talking about 1984. I think audience, they don't have the exact idea of what happened in 1984. मेरे को पता है कि it's really difficult to collapse everything in this 1 hour of podcast if you start talking about 1984 because there's so much. But some key points, some things that you think कि ये चीज़ें जो है 1984 के बारे में लोगों को पता होनी चाहिए। तो 84 के बेसिकली दो पहलू, एक तो जैसे हम सब जानते हैं 40 साल हो गए 6 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार, और दूसरा जो मिसेस गांधी की असैसिनेशन के बाद, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उनकी असैसिनेशन के बाद जो कत्लेआम शुरू हुआ दिल्ली में, और इंसान के कई बड़े शहरों पर जो कत्लेआम हुआ सिखों का, और एक पैटर्न से हुआ कि सिख आदमियों को घरों से घसीट के बाहर लाया गया, उनको मारा गया, उन पे तेल छिड़का गया। दिल्ली में तो थ्रू आउट दिल्ली में एक पैटर्न फॉलो हुआ कत्लेआम का कि कई जगह पर जलते टायर डाल दिए गए, कहीं पर तेल डाला गया, कहीं पर गोली से मार दिया गया, क्योंकि वैसे ही प्लान था, और ऑब्वियसली प्लान था। अगर कोई भी, और मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ कि कम्युनल वायलेंस जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होता, स्पॉन्टेनियस कभी कुछ नहीं होता। कम्युनल वायलेंस कहीं पर भी आप देखेंगे, मैसेकर्स देखेंगे, ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, ये स्टेट सपोर्टेड होते हैं और ये प्लान्ड होते हैं। नहीं तो आपको सारा पता है कि किस बस्ती में कौन रहता है, राइट। और इतनी बड़ी मात्रा में अगर कुछ इतना स्पॉन्टेनियस है तो इतनी बड़ी मात्रा में इतना सामान, इतना तेल, इतना केरोसिन, ये सब कैसे आएगा। टायर्स लाए जा रहे हैं लोगों को जलाने के लिए, सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी जगहों से लोगों को लाया जा रहा है दिल्ली में लोगों पर अटैक करने के लिए। तो ये आपने पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया है। Just to live I'm sorry to cut you off. Just to live definitely that you are talking about what happened after 84. Because we started off with that 84 में क्या हुआ था? So no, I'm talking about Delhi 1984. Okay. दिल्ली 1984 में मिसेस गांधी की हत्या के बाद में एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिल्ली, 31 अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने तक दिल्ली में कैसे कत्लेआम चलता रहा कि सिख आदमियों को उनके घरों से बाहर लाया गया, उनको मारा गया, उनको अटैक किया गया, उनको जलाया गया, कईयों को गोली से मारा गया, टायर डालते गए जलते, और बहुत सी औरतों के साथ दिल्ली में बलात्कार और लूटपाट का कोई हिसाब, गुरुद्वारों पर अटैक किया, लूटपाट का कोई हिसाब, ये सब दिल्ली में हुआ। तो और जब हम इसकी बात करते हैं, एक और सवाल बहुत बार मुझे पूछा जाता है, क्या सब में लोगों को मारा, क्या सब में सिखों को मारा? तो ऐसा नहीं। मैंने बहुत बार बोला कि बहुत सी होप की स्टोरीज़ दी हैं, यहाँ पर नेबर्स ने अपने नेबर्स को प्रोटेक्ट करा है, हिंदू नेबर्स ने, मुस्लिम नेबर्स ने, क्रिश्चियन नेबर्स ने अपने नेबर्स को प्रोटेक्ट करा है, उनके लिए लड़े हैं, ऐसा हुआ है, बट वो बहुत कम केसेस। ज़्यादातर दिल्ली में कत्लेआम हुआ,
और ना उस समय पुलिस भी प्रोटेक्ट कर रही थी, ना कोई इंस्टीट्यूशन था जो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब सोचने की बात ये होती है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस किसके लिए? ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं अपना काम करने के और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये तभी होता है जब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। और दर्शन कोच ने बोला है कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं तो वो पुलिस वाला उनको कहता है कि मैं आपको खाना तो खिला सकता हूँ पर मैं आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले जाए। You mentioned Darshan Kaur quite like couple of times now in your conversation. Would you like to give us reference about Darshan Kaur as well? तो दर्शन आंटी सर्वाइवर हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा और 1984 में उनके हस्बैंड को मारा गया। उनका एक बच्चा उनसे अलग हो जाता है थोड़ी देर के लिए। एक बच्चा को मॉब जो है सनिये से अटैक करते हैं, उसको आज भी निशान है। और उसके बाद काफ़ी देर ये कैंप में रही और दिल्ली की सड़कों पे भी उन 3 रातों तक घूमती रही अपने बच्चों को लेकर बाकी औरतों के साथ। तो आप इमेजिन कीजिए कि दिल्ली सबका घर है, राइट। 1947 में दर्शन की दादी उजड़ के आती हैं उस तरफ से इस तरफ, और दर्शन कहते हैं कि 1984 में मुझे लग रहा था कि ये मेरा 47 है, कि 3 दिन तक वो दिल्ली की सड़कों पे थी बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सेफ्टी के। कहती थी लगता था अगले मोमेंट पे कुछ हो जाएगा। और दर्शन जी ने अपना केस परस्यू किया कोर्ट में, बहुत बहुत लड़ाई करी उन्होंने, और आज भी लड़ रही हैं। 40 साल हो गए हैं, पर कुछ जाकर उनसे पूछे कि वो जो ट्रॉमा का साइकिल है वो तो कभी ख़त्म ही, वो औरतें आज भी उस ट्रॉमा के साइकिल में हैं। वो आज भी उनका 1984 आज भी चल रहा है। Two things that I want to add here is actually I want to ask one thing and add the other thing. First thing is that आपने ऐसे बोला कि 1947 लगा उनको, तो when I was talking to my grandfather, he is migrated from Pakistan और 1947 के टाइम भी हुआ। तो जब मैं उनसे वो स्टोरी सुनता हूँ तो उन्होंने मेरे को सेम काइंड ऑफ स्टोरीज जो मैं बुक में पढ़ रहा था, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपन विद देम, कि वो पाकिस्तान से कैसे आए, वहाँ पे बहुत सारे पैसे थे बट दे हैव टू लीव एवरीथिंग, यहाँ आना यहाँ कुछ पता नहीं। ही यूज्ड टू जस्ट स्टे इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सोते थे, बारिश सर्दी गर्मी कुछ पता नहीं चल रहा था क्या है। एंड while I was reading a book as well, I think that's what I was also thinking until I read that point. जब आपने when I was reading it मेरे को लगा कि यार if this is so much similar to 1947, but you've mentioned that point itself in the book कि it's very similar to what happened. And the second thing that I want to ask is that you say that they are still fighting. So what exactly are they fighting for? Do they want justice? Do they want money? Do they want people to know what happened with them? So what is it that they want? पहला तो सबसे पहला बात है एक्नॉलेजमेंट, कि आप एक्नॉलेज तो करें कि कुछ ऐसा हुआ है। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि ये बोला गया है, आपको पता होगा कनेडियन पार्लियामेंट में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कौमा घाटा मोड़ों के लिए माफ़ी मांगी। क्या हमारे देश में ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने कानून खड़ा को बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर द 1984 एंटी-सिख मैसेकर्स? पहला तो हाँ, ये बात बहुत बोली जाती कि मनमोहन सिंह जी ने माफ़ी मांगी, बट वो मैं बहुत बार लोगों को बोल चुका हूँ कि वो नानावटी कमीशन के ऊपर डिबेट हो रहा था, वो एजर्शन उस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में आया था। ऐसा नहीं था कि बोला गया कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैपेंड इन 1984। और जहाँ तक उनकी बात रही, उन्होंने 1984 में इतनी मदद की है लोगों की, एंड देयर इज़ एम्पल evidence and organizations who speak about the support that he has given to people, right? So मुझे लगता है कि उनको ऐसे ही ले आते हैं, कोई भी बात होती है उनको ले आते हैं। And then the first step, like I said, is acknowledgement कि ये हुआ है, right? And we are sorry for this. That never happened. Acknowledgement that 1984 is a national disgrace. पर अब प्रॉब्लम ये है कि 1984 के बाद भी बहुत कत्लेआम हुए देश में। तो 1984 में डिले के कारण क्या है कि एक इम्प्यूनिटी का पैटर्न बन गया कि अभी इसमें कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या। और politically motivated and targeted killings help get richly in the electoral politics.
तो फिर आप इसके बारे में बात नहीं करोगे। और दूसरा, जब हम बात करते हैं पैसा दे दो उनको या कॉम्पनसेशन, एक बड़ा शब्द इस्तेमाल होता है, मुझे लगता है वो शब्द ही बहुत शर्मनाक है। क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि दर्शन कौर अगर उस सिचुएशन से ना निकली होती तो शायद आज भारत के प्रधानमंत्री होती। लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी की तो कोई बात नहीं करता, और कत्लेआम में एक पीढ़ी नहीं 3 पीढ़ियाँ सफ़र करती हैं। राइट, दर्शन कौर जी ने अपना घर गंवा दिया, अपनी फैमिली गंवा दी। एक एक ट्रॉमा का साइकिल है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो भी चल रहा है। बाकी जितनी हार्डशिप्स उनका कोई हिसाब नहीं, वो चीज़ें उनके बच्चों पर आ गई। दे वर स्कूल ड्रॉप आउट्स, अगेन मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए आगे। अब उनकी 3rd जनरेशन है, वो लोग किसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे। तो हम लोग, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम रेपरेशंस की बात नहीं करते, हम सीधा कॉम्पनसेशन पर आ जाते हैं। कॉम्पनसेशन इज़ नॉट द राइट वर्ड। आप रेपरेशन की बात कीजिए, आप रिकन्सिलिएशन की बात कीजिए, और वो जो दोनों चीज़ें वो ना मैं बता सकता हूँ ना सरकार बता सकते हैं, वो दर्शन आंटी बता सकते हैं तो कि रेपरेशंस क्या है, कि ये रिकन्सिलिएशन क्या है। और इनमें से ऐसा नहीं है कि ये औरतें को इनको इसको भूलना चाहती हैं या माफ़ करना चाहती हैं, वैसा नहीं कि, बट दे आर सीकिंग फॉर क्लोजर। और वो क्लोजर कहाँ से आएगा? जब आप एक काउर की बात करो, जब आप रिकन्सिलिएशन की बात करोगे। बट कब तक लड़ेंगे मतलब, और कौन लड़ेगा इनके बारे में? बट डू यू थिंक यू रिटन द बुक, डू यू थिंक यू विल फाइट फॉर देम? I think my seniors, like I said earlier, many senior journalists who've written books, in a way, they've kept the fight alive. They've encouraged, they've mentored people like me to keep the fight alive, to bring out the stories, what happened in 1984. And I will say that history of atrocity and oppression is everyone's history. It is not just my duty or, or Darshanathi's duty to keep the issue alive or keep demanding for justice, accountability, or Harminder Ram or Seema Mustafa or many other people who've written about it, who still talk about it. I think it's a collective duty. It's so true. I mean, I would like to read one thing from the book which really moved me. So, I think it's about Darshanji stories itself. I think so, yeah. So it says about 4 p.m. after the mob had murdered all the Sikh men they could get hold of in block 32, they instructed all women seated outside their home, now your men are dead, come out and sit together in the park nearby block 32. The women came out and all huddled together. The mobsters offered them some water, but no one drank it. Then the men began dragging off which girl they caught their fancy. Each girl was taken by a gang of some 10 to 12 men. Many of these girls were in their teens. They would be taken to nearby shelter, raped, and then sent back after a few hours. Darshan recalled the men were monsters. They also raped women who were of their mothers' and grandmothers' age. And this was really difficult for me to read. And might be really difficult for you to hear and the person who was staying. I mean, what would you like to tell about this incident when you were listening or, when you were recording this kind of having this kind of conversation? So this particular incident, again, you won't believe, but I started beating Darshananti in 2013, and we discussed this, I think around 2020, for the pandemic. So I've been meeting regularly, I used to go to her home regularly to talk, and then there were a lot of events that we attended together. But this, you can see that it took 7 years for both of us to reach and to a point where we discuss this. So like I said in the beginning, these conversations are very, very difficult, and it's also traumatic, right? You have to just go back, but
I can't tell you that I'm just extremely grateful to all of these women in the book who opened up and who just shared their lives with me. But when you hear this, these are very difficult traits, and it's true. Yeah, it just shakes you. It just shakes you. That in your book, you've mentioned that they have petrol bombs, they have white powder. You said they had tires. तो ये इतना सब कुछ मिल कहाँ से रहा था सबको, मतलब ये सप्लाई, मतलब ये क्वेश्चन तो आते हैं कि मतलब एवरीथिंग वाज अवेलेबल टू देम सो इजीली, कहाँ से? Hence the seat. It's not possible. Like I said in the beginning as well, that सरकारी बसों का इस्तेमाल हो रहा है, वाइट पाउडर की बात हो रही है, इतनी मात्रा में वाइट पाउडर अवेलेबल है, केरोसिन या तेल अवेलेबल है इतनी मात्रा में, और पुलिस बिल्कुल मिसिंग है सीन से. तो ये सारी चीज़ें कब होती? When I ask you, कब होती? When the state is sponsoring, when the state is sponsoring it, when the state is involved. So of course the state was involved. That's why it happened. That's why इतनी सारी क्वांटिटी में सब चीज़ें अवेलेबल थी. और वही बात जब हम करते हैं कि इतने लोग दिल्ली में मारे गए, उनकी डेड बॉडीज कहाँ हैं? डू यू थिंक कि मॉब आ रहा था, मॉब उनको मार रहा था, उसके बाद मॉब उनकी बॉडीज उठा के लेके जा रहा था? कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ पैटर्न तो था ना. वेयर डिड द बॉडीज गो? They bought it there itself. I mean, it could be anything. Like there are people who've seen, who said that, at a lot of places these bodies were burnt, right? And when we say burnt, it's like they've thrown kerosene, they burnt alive, they burnt people alive, and they've also there in the book also we've documented that women have said that this one woman has said that she's seen a truck full of bodies. So I'm sure they were going somewhere. Do you think humanity failed at this part? Of course, I think there are multiple times historically where we have failed collectively. We have failed collectively, and 1984 is one of the darkest period of Indian history. That what happened in 1984, like, and I'll say it again, I won't shy away. It's a national disgrace, and it's. It is like where you see that people from last 40 years are still fighting for justice, and it eludes them, right? It is a national disgrace. It is a national embarrassment that we're not talking about. And when I was researching about this podcast, I just happened to hook on to this Rajiv Gandhi's interview, which says that when a big tree falls, the earth shakes a little. I mean, that statement was not. After reading a book, if I would have heard this before reading a book, I might not have reacted in the similar way. But after reading the book, I mean, earth shakes a little is not an appropriate statement. Like, just my thought. I think it's a shameful statement coming from the head of the country when thousands of Sikh men were killed, women raped, and these people are living in camps. I think it's a shameful statement. It's a very shameful statement. So do you think we should call it a riot? I don't think so. It is not a riot. In riot में बहुत बार हो चुका हूँ, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दंगा हो गया, लड़ लिए लोग, है ना? और it's a massacre. It's a massacre because you've just targeted Sikh community, targeted Sikhs everywhere in Delhi and other parts of the country. And Delhi, I would say, is still spoken about. There are a lot of other places in this country where, the same kind of violence happened. And there's not much noise there because, again, You mentioned in your book that boys and girls used to be called as Seekh Kebab. उनको Seekh Kebab बुलाया जाता था स्कूल में, जिसके कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया. उनका मेंटल स्टेट सही नहीं था. So can you tell us more about that? Right, so a lot of children after 1984 इन लोगों के घर बदल गए, ये अलग जगहों पर आ गए रहने के लिए, फिर ये स्कूल जाना शुरू किए, तो स्कूलों में कुछ चढ़ाया जाने लगा.
बहुत से सिख लड़कों को सीख कबाब कहा जाने लगा, राइट। और फिर वो ये कहना कहा जाने लगा कि ये फादरलेस कॉलोनी से आते ही नहीं। तो ऐसी सारी बातें आप इमेजिन कीजिए, जिस बच्चों ने अभी अभी अपने फादर को they've seen, you know, he's burned alive in front of them, they've seen their mother struggling, और उन बच्चों के साथ स्कूल में ये सब हो रहा है। तो फर्स्ट it pushed them to, you know, it pushed them, and a lot of them told me कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, वो डिप्रेशन में आ गए, और एक fear of backlash आ गया। वो as a minority I will say I also have that fear, even today, fear of backlash। तो इमेजिन उन्होंने क्या क्या देखा उन बच्चों ने। और उसके बाद जब स्कूल ड्रॉप आउट हो गए तो फिर मीनियर जॉब्स करने पड़ रहे हैं आज। तो ऑल ऑफ दिस वायलेंस is because we did not address it, and the trauma of the cycle and the violence continued in different form, but it continued with these people. What inspired you to write about all these things? Because you mentioned that you were not writing book on these topics, but you were just drafting few reports that you wanted to give, but you eventually ended up writing about this. So what was your inspiration behind writing or writing a book on it? Like I said, as a minority, I have a fear of backlash. And also I said it in the beginning that there's not enough record worldwide of about in every violence, in every conflict, you will see that every marital, like I said previously, that it becomes political. You will really find the detail of the aftermath. So through this book, my portrait attempt was to basically, put down the aftermath, that what happens after that. It just doesn't end in that particular period of violence. It stays, and it changes the lives of people. It does it all together. So when you hear all of those stories, when you meet these people, so I just wanted to bring all of that out. And I think you successfully written it in a really nice way. I'll have read the book, I can say that. you just be humbled by not seeing that. But I mean, it's written it's not easy to read for sure, but it's written really beautifully. Also, thank you so much for giving us your time. I think everyone should read this book, and they should know what happened in 1984 and what happened after 1984. Because a lot of people know what happened in 1984, but after that, the repercussion of the thing that happened in 1984 is very few people know about. So I think everyone should read this book, and thank you so much for coming on our podcast and giving us time.